KKR. Well, you see, मेरे पास शर्मा है, अश्विन है, परेरा है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास रसल है, चावला है, शाकिब है और नारायण भी है। जी हाँ, शायद इस समय अगर पेपर पर इन दोनों टीमों को देखा जाए तो गौतम गंभीर धोनी को कह सकते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इस टाइम नामुमकिन है। स्वागत करते हैं आप सबका नाइट क्लब के एक और धुआंधार धमाकेदार एपिसोड पर। आज मुकाबला है कोलकाता नाइट राइडर्स राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का। मतलब आज इस मैच के साथ साथ और बहुत सारी बातचीत करेंगे नाइट क्लब पे। आकाश चोपड़ा एक्स नाइट। यस सर। ये शो जो है इस पर हमने मौका दिया है फैंस को, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हमारे साथ फैन जुड़े #आमी KKR के साथ। लेकिन कॉन्सेप्ट कमाल है ना, बिहाइंड द सीन्स कितने जरूरी हैं आकाश मैच के साथ साथ जानने के लिए। यही तो कहानी है, क्योंकि सब चाहते क्या जानना, हर फैन क्या चाहता है। अगर मैं अपने आप को फैन समझ लूं एक बार, तो मैं क्या चाहता हूं, मैं भारतीय टीम के पीछे जाना चाहता हूं, मैं अपनी फेवरेट फ्रेंचाइज के पीछे जाना चाहता हूं और देखना चाहता हूं यार ये नट बोल्ट्स क्या है इनके, क्या है, व्हाट मेक्स देम टिक एंड व्हाट मेक्स देम इनटू दिस वंडरफुल टीम, बिकॉज़ इट इज अ वंडरफुल टीम, कोलकाता नाइट राइडर्स। सो ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट opportunity to just get behind the scenes and know what these guys do. कमाल की बात यह है कि जो टीम वाले हैं वो भी बिहाइंड द सीन्स जा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि जिसकी पूरी दुनिया फैन है वो क्या करते हैं। भाई मौका था, थोड़ा टाइम ऑफ था, हमने भी बहुत कोशिश करी एक छुट्टी मिल जाए ताकि हम भी जाके फैन देखें, लेकिन इनके लिए तो स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी। लेट्स फाइंड आउट हाउ द कोलकाता नाइट राइडर्स नाइट्स एंजॉयड शाहरुख खान्स फैन। घर वाले भी ना मेरे समझते नहीं है, कभी कभी उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। The Kolkata Knight Riders camp is full of surprises this season, and along with a lot of hard work on the field comes some unwinding. We are at a screening of Fan, and we're going to talk to players about what they're expecting, what they're thinking, all of that. What are you expecting from today's movie? I'm expecting some fun, so supporting the owner, so just make sure we get that in there. Yeah, so come down and see what it's all about, Bollywood, and good to see the boys know where they're, knows the hand that feeds them. So yeah, they've come down and support the owner. Jacques, Yeah, Vic. are you a Shah Rukh Khan fan? I am, yes. And you're going to enjoy today's movie? Oh, sure I am. Don't say. He's put you in your squad for bloody 8 years, hasn't he? You'd have to be a fan. Have you watched the Shah Rukh Khan movie before this? I've seen a few bits and pieces of it, yes. But not a Come full on, movie. Chakta India, Don, Om Shanti Om. New Year's, New Year's. Happy New Year, Happy yes. New Year, yeah. See you then. Have you watched all of the movies that you just mentioned? Chennai Express. Oh, I know them all. I've seen them all. What are your expectations आज की मूवी से? जो मैंने रिव्यूज़ देखे हैं और जो मैंने पढ़े हैं, सुना कि बड़ी ज़बरदस्त मूवी है एंड नोइंग कि खान साहब की फिल्म है, has to be entertaining, has to be fun. That's why I'm here to watch. तो हम सेफली कह सकते हैं कि आप SRK के फैन हो? या अभी से नहीं, काफ़ी पुराना फ़ैन है उसके। ऑलमोस्ट जब भी फिल्में आती थी या आई हैं वो मैं ज़रूर देखता हूँ उनकी फिल्म, बिकॉज मुझे उनकी एक्टिंग और उनका पैशन पसंद है जो करते हैं, जिस तरीके से वो एक्टिंग करते हैं। हाँ जी। या एवरीबडी इज़ वेरी एक्साइटेड, इवन the Australians, the South Africans, and you know they all are here with subtitles, and they're in for a surprise, good surprise. टीम को भी वो प्यार करता है, लड़कों को, लड़के भी उसकी रिस्पेक्ट उतनी करते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा स्टार है। हाँ जी। और फिल्म शुरू हो गई। हाँ जी। नहीं। Thank you so much. Enjoy the movie. Thank you. इस लक्ष्य को हासिल करना। Very good. Enjoyed it. बहुत बढ़िया मूवी, मजा आया। Hi, Anu. How do you like the movie? Sensational. What's your favorite part? Favourite part was the ending, All right. because normally when you, no, we're not going to say the plot, but normally when you see the ending, it happens the other way. It's good that it happened that way. Very good, very good. Movie was awesome, liked it. How did you like the movie? कैसी लगी? Yeah, it was nice, something different and yeah, some kind of different story. So yeah, it will be good. It was very nice. Did you enjoy? What was your favorite part? I think most of the movie was really good, and the favorite part was, I think, when he goes to that, to hit that guy, Sid Kapoor. That was really nice. A true fan only can do that. Well, so there we have it. Everybody enjoyed the movie. Everybody thought it was really offbeat. I personally really enjoyed it. But now it's back to cricket. भाई ब्रैड हॉग और जैक कैलिस के लिए सबटाइटल्स का अरेंजमेंट भी किया गया होगा, बिकॉज उन्होंने भी काफी एंजॉय करी। लेकिन इट्स बीन दैट काइंड ऑफ अ फिल्म। आकाश, आई नो
that you and your wife have also been trying to get some time to go watch this film. So she's actually watched and she's been gloating. She's been saying, "Oh, it's a fantastic movie." वो हमारे साथ चक्कर ये है कि एक ही जना जा सकते हैं एक बारी में, तो फिर you know, to have a happy married life, wife has to be happy. So in this case, she's happy. I think Shah Rukh and the entire Kolkata Knight Riders team should extend an invitation to ex-Knights also when there is a special screening. But you look at, I mean, everyone is a big fan, whether it's a foreign player, whether it's all your Indian players. लेकिन ये team bonding exercise भी हो जाती है साथ-साथ. यार बहुत ज़रूरी है क्योंकि see, this team comes with certain amount of baggage. Let's be very fair about it. क्योंकि once the team is being owned by a superstar, तो certain things come with it without you even wanting for it. तो अब वो है, वो चलेगा आपके साथ. तो फिर it's important one to know who your owner is. So that's a great you can actually like get a peek into his life and what he's all about, and you can pull his leg as well. और वो हमने बहुत किया actually. तब उन्होंने actually he gave us CDs at that point in time to just not us of course, but some of the guys, Chris Gale, Brad, David Hussey was there at that time. उन सबको उस समय मूवी आई थी ओम शांति ओम. तो ओम शांति ओम की उनको सीडी दी गई और सबको बताया चलो देखो भाई देखो who I am, and then some guys actually went and watched The Foreigners और they pulled his leg like nothing before. ओम शांति ओम में दर्द डिस्को भी था ना? अरे बहुत था. हैं? दर्द डिस्को में 8 पैक भी थे ना? हाँ. ये टीम ओनर ऐसे, ये टीम ऐसी सिर्फ मूवी दिखाती नहीं, आपको बोलती है जाके भाई ये बनाओ भी, क्योंकि फील्ड पे भी जाना है, पूरा टूर्नामेंट खेलना है और टूर्नामेंट जीतना है. So they also have a very hard taskmaster in Adrian Leroux, the physical trainer. He's a sports scientist who travels with Kolkata Knight Riders, and he has been very busy in the gym with your Knights. We are in conversation with the fitness guru of the Kolkata Knight Riders, Adrian Leroux, to find out how our Knights stay in shape. Now, Adrian, can you tell us before a big game, what fitness regimens do the boys go through and how do they stay in shape and ready for the game? Okay, with the IPL, obviously there's a lot of traveling involved and there's a lot of what we call workload in terms of practice. So they do a lot of practicing and then the matches and then the traveling. So it really depends on the individual on the day, what we do. All right. So this team is extremely diverse. The squad this year has a Hoggy and a Kuldeep Yadav. So how do you customize their workouts according to their needs? What do they have different requirements? It's important to individualize the program. So a guy like Hoggy who's over 40 and a guy like Kuldeep is 20 years age difference. So we'll individualize their programs a bit more. Although a guy like Hoggy he's always keen to take on a challenge, so his program is pretty much the same, but although we do twist it here and there for him. And talking about the superstars of the season so far, Robin Uthappa and Gautam Gambhir, we've heard Gautam Gambhir has been training a lot before this season started, so can you walk us through what he's been doing? Well, I know Gautam has got his own home gym, so to speak, so he's got access to good equipment and we do provide programs for him, and as I say, he's been with the squad for a number of years. All right, now for something fun. Can you tell us one exercise that all of the boys dread doing in the gym? Running on a treadmill, I do enjoy the guys to do a 2K time trial, so in other words, you run 2Ks as quick as you can. So not everyone enjoys doing that. All right, we see here that you have your kit bag. Can we get into it and see what Adrian Leroux carries in his kit bag? Yeah, you're welcome. I can give you a quick look. So basically, we'll have a lot of foam rollers in here. Okay. We do spend a lot of time on the foam rollers. So we'll use a lot of the bands. We'll use a lot of the medicine balls. It's not easy being a Knight. Akash, have you been going to the gym? Not recently, but then when I was there, you were forced to go to the नहीं, you are here also. आपने अच्छा, देखा नहीं, पीछे टीवी पे गेम प्लान चल रहा था. You are at the gym. Actually, you were at the gym. Right. So Adrian Leroux must be a very happy man. क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये थी, मतलब प्रॉब्लम नहीं थी, but he was obviously right. So we had this camp in Bloemfontein before the second IPL started. So we had a boot camp. तो होटल से जिम था, it must be good 5.5-6 kilometers. तो जनाब भगा के ले जाते थे और हम कहते थे भाई साहब अगर भगा के ले जाओगे तो हम क्या करेंगे, मतलब आज कार्डियो थोड़ी ना सिर्फ करना है, कार्डियो करना तो वापस आ जाएंगे. कह रहे नहीं मैं आपके साथ भागूंगा. और फिर जो भी आपको करने के लिए कहता था उससे ज़्यादा एड्रियन लीरो खुद करता था. एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल लिटिल थिंग आई वांट टू ऐड. व्हेन दिस फ्रेंचाइज वाज बॉट at that point in time, since then a lot of things have changed. Obviously a lot of things have changed. Captains have changed, their fortunes have changed and whatever else. But Adrian Leroux, Andrew Liepers, they haven't changed, because when that franchise was picked, Shah Rukh Khan was quite clear about the fact that Mera support staff has to be the best in the world, and best people around at that point in time were Adrian Leroux as obviously a sports trainer, and Andrew Liepers as a physiotherapist, and these guys are still there getting the team around.
चलिए भाई, अच्छी बात ये है कि टीम फिट लग रही है। आकाश चोपड़ा जी ने जिम जाना शुरू कर दिया। गोइंग टू द जिम tomorrow also? Yes. You're every day at the gym, Yes, because I'll be game there. plan plays I'll every be day. there. I'll So be he's there. always I'll be at the gym. और गेम प्लान में आकाश चोपड़ा को जिम में सिर्फ देख नहीं सकते, उनसे जान भी सकते हैं कि मैच में क्या हो सकता है। तो कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का जो मैच है उसमें क्या उम्मीद की जाए, लेट्स गेट योर प्रीव्यू। गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स फुल फॉर्म में है। ऑन द रोड वो 2 मैच जीत चुकी है और अगली चुनौती MS धोनी की राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स की तरफ से पेश होगी। केविन पीटरसन की इंजरी के बाद टीम के मिडिल ऑर्डर को एक भारी झटका मिला है और मिडिल ओवर्स में बाउंड्री परसेंटेज देखें तो सिर्फ 38% ही हैं, यानी केपी की कमी बहुत महसूस होगी। केकेआर के बॉलर्स के लिए ये तो एक अच्छी खबर है। बल्लेबाज आप कहीं दूर न जाएं, गेंदबाजों से भी ज्यादा खतरा नहीं है। आरपीएस के 3 मेन बॉलर्स की एवरेज देखें तो केकेआर के बैट्समैन के मन में लड्डू फूटेंगे। केकेआर के लिए उनकी सबसे बड़ी ताकत सुनील नारायण अब वापस आ चुके हैं और अब तक प्रदर्शन जबरदस्त रहा है। मैच पुणे के बल्लेबाज वर्सेस सुनील नारायण होने के पूरे आसार हैं। क्या धोनी के बल्लेबाज केकेआर को रोक सकेंगे? Well, you're looking at two teams completely at the opposite end of the spectrum. Kolkata Knight Riders, they're good travelers. 2 matches away from home, they've registered 2 wins, and now they come to Pune, where rising Pune Super Giants in their very first game, Akash faltered. It's a team which is running out of steam, to say the least. Is it because of the bowling? And running out of time as well, Jatin, because it's okay to start slowly, but then you have to pick up. If you don't pick up, then it's too late to pick up, because there is not enough time. They've got injuries as well. KP is... in all likelihood might just be ruled out for the entire tournament. If not that, at least for the next few games. Steve Smith hasn't fired so far. Dhoni hasn't batted enough. And yes, the bowling is an issue. But उनके साथ problem ये है कि करेंगे क्या bowling खराब है तो उसका मतलब what is the solution? They have Zampa as a leg spinner, but they already have 3 spinners. Plus Rajat Bhatia, Murugan Ashwin, Ravichandran Ashwin, Ankesh Sharma and Rajat Bhatia. So another spinner, unlikely to happen. Scott Bolland is their fast bowling option. Yeah. But then he's not really a T20 superstar, is he? मैं कह रहा हूँ एक तरीका है जी, क्या है कि जो स्पिनर है उनमें से एक स्पिनर के 4 ओवर पूरे करा लीजिए। ये भी एक अच्छा आइडिया है। रविचंद्रन अश्विन तो है। I mean that of course becomes the biggest factor for Pune to take on this mighty Kolkata Knight Riders outfit, especially the batting order. Ravichandran Ashwin appears to be one of their best bets. He is, but unfortunately, if I remember correctly, it's only once that he only one game. Yeah. Quota of 4 overs. In the first game, bowled only 1. In the last game, bowled only 3. People who've conceded more runs have finished their quota, but he hasn't. So there is something that Dhoni knows about Ashwin at this point in time that you and I don't. And a lot of people don't, because common sense तो कहती है कि यार अश्विन को कराओ, लेकिन नहीं करा रहा है धोनी, तो there has to be a reason is what I think, but क्या है वो reason we don't know. खास करके मिडिल ओवर्स में जाके मिडिल ऑर्डर पर प्रेशर डाल सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचना तो पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के जो ओपनर्स हैं वो पहुंचने नहीं दे रहे बॉलर्स को, मिडिल ऑर्डर पहुंच नहीं दे रहे, क्योंकि टॉप पे है ना गौथप्पा। That's what the fans are calling them, गौथप्पा। बॉलरों के लिए स्यापा। You know, until now in the IPL, we've been talking about this trend that the openers have been extremely successful. But in almost all the teams, one opener is fired, the other hasn't as much. But for Kolkata Knight Riders, दोनों ही openers ने बेहतरीन फॉर्म दिखाई है। लेकिन ये कोई आज की कहानी थोड़ी है, ये गौथप्पा की कहानी तो 2014 से चलती आ रही है। आईपीएल 2016 के 2 सबसे बड़े ट्रेंड रहे हैं टीम्स का चेस करके मैच जीतना और ओपनर्स का बढ़ चढ़कर रन बनाना। इसी में गौथप्पा यानी गौतम उथप्पा की जोड़ी सबसे आगे है। 4 पारियों में 66 की औसत से 264 रन बनाए हैं, यानी इस साल की सबसे बेस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इन्हीं की रही है। इस जोड़ी ने सारे बॉलर्स के नाक में दम करके रखा है। अब तक 4 मैचों में पहली विकेट के लिए स्कोर्स रहे हैं 69, 21, 92 और 82, यानी 4 में से 3 50+ पार्टनरशिप्स। इनफैक्ट पेयर्स की बात करें तो ये दोनों उस लिस्ट में भी सबसे आगे हैं। 1176 रन हैं गौथप्पा के नाम। धवन वार्नर काफी करीब हैं, लेकिन 28 मैचेस में 18-30 से अधिक की पार्टनरशिप दिखाती हैं कि दोनों कैसे हर बार टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं। Are they the best opening pair in this IPL? इस जोड़ी ने अब तक केकेआर की हर जीत को आसान तो बनाया ही है। ये कारवां चलता रहा तो well they might just be declared the best pair in this IPL.
Leading by example, Gautam Gambhir with the bat, complemented by Robin Uthappa at the other end. But what do you need to do? The bowlers, how do they stand up? Well, let's look at the battle of the off spinners. हमने रविचंद्रन अश्विन की बात करी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स का जो ट्रम्प कार्ड रहे हैं वो है सुनील नारायण. You look at the numbers, T20 power ratings, which looks at almost all parameters. Win contribution 88 से थोड़ा कम, adaptability, playing under pressure, run saving standard और consistency में 97.4. 2013 से स्टार रैंक नंबर 1. पिछले मैच में आकाश विकेट्स भी मिले, लेकिन इनका सामना है रविचंद्रन अश्विन से. इनके अगर आप मापदंड देख लें, पैरामीटर्स जो हैं, तो काफी पीछे लग रहे हैं ये नंबर्स. कंसिस्टेंसी 82.7, स्टार रैंक नंबर 8. लेकिन इस टाइम दोनों को आप अगर आमने सामने डालेंगे तो क्या राय रहेगी? Who would you have in your team? I'm a huge Sunil Narayan fan. Let me admit that right at the outset. But at this point in time, one guy is nearly at his peak of his powers. That's Ravichandran Ashwin. May not be utilized that well. That's been the case. But Sunil Narayan, इनके ऊपर स्कैनर बहुत बड़ा है. उनके वो माइक्रोस्कोप लेके सब बैठे हुए हैं और वो उसके नीचे देख रहे हैं कि कर क्या रहा है खिलाड़ी. तो फिर नारायण जो कि T20 के प्रूवन मैच विनर हैं, उनको मैच विनर की तरह उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है. कि अगर आपके पास तलवार तो है, लेकिन आप उससे कह रहे हैं कि कपड़े से लो, वो काम है. क्योंकि नंबर 7वां ओवर कौन डालता है? 20 ओवर के खेल में नंबर 7, 7th, 9th, 11th and 13th overs are bowled by your weakest link. Your non-descript Indian bowlers bowl those overs, but that's not the case with Kolkata Knight Riders. He's played only 2 games. In both the games, he started after the power play overs, has finished his over before the 15th over. That means that he's not really been used as a force that he once was, but you can also understand why. And the captain and even Surya Kumar Yadav, after the matches in the press conferences, both of them said कि धीरे-धीरे we are going to get him back into the power play. तो शायद जो एंट्री वापस दे रहे हैं रीमॉडल एक्शन के साथ, शायद थोड़ा सा क्वेश्चन दे रहे हैं सुनील नारायण को. लेकिन उनका सोचिए, आसान नहीं रीमॉडल एक्शन करके वापस आए हैं. जैसे आकाश ने कहा, पूरी दुनिया एकदम माइक्रोस्कोप लेकर उनके एक्शन को देख रही है. संजना caught up with Sunil Narayan and the man behind his remodel action, Carl Crowe. कोलकाता नाइट राइडर्स का सुनील नारायण के एक्शन को बदलने में एक बड़ा हाथ था. शाहरुख खान ने बायोमैकेनिस्ट कार्ल क्रो की मदद मांगी, जिन्होंने ट्रिनिडाड जाकर सुनील नारायण के साथ 1 महीना उनके एक्शन पर काम किया. ऑक्शन से पहले केकेआर ने न सिर्फ नारायण को रिटेन किया, बल्कि उनके ऐसे मुश्किल समय में उनकी टीम और देश से पहले उनका साथ निभाया. Touted to be the magician of the Kolkata Knight Riders spin attack, we are with Sunil Narayan today, and joining him is somebody who's worked extensively with him, Carl Crowe. Well, Sunil, tell us, how difficult was it, or how much work did you have to put in to remodel your bowling action? I mean, at the start it was difficult, but I think with the help of all my coaches back home and Carl, I think they made it a lot easier, and the motivation from everyone expecting me back was even better. Alright, and you have been an off spinner yourself, you're an off spin bowler. So did that somehow help you understand Sunil's aspects where you needed to work? I think there's some understanding there, yeah. So when I came to work with Sunil, I had a very open mind about what could be. Got to say that he worked incredibly hard right from the start, which was brilliant to work with, and he mentioned from day one. I think we had some good conversations, both on the same page right from the start, and that really helped. So yeah, to answer your question about me bowling, has some help, but I wouldn't say not exclusively. And KKR was a big support through this entire phase? Yeah, exactly. They were always keen and helping in whatever way. They were always asking. There wasn't a day goes by that they wasn't messaging to find out what's going on. And I think the amount of help I have gotten was pretty good from Queen's Park, from the government, from KKR. I think I can ask for more. Okay, thank you so much. Well, we'll have to wait and watch and find out when Sunil Narayan bowls in this particular game. But also, you look at the bowlers around him. पहले 6 में, उसके बाद एंड में, यहाँ पे शायद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के ऊपर स्कोर कर जाती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, जो बाकी ऑप्शन है आकाश. लेकिन any other chinks in the armor for Kolkata Knight Riders? See, our job is to nitpick. That's why we are paid by big bucks. Paid big bucks. Say that. I was going to say paid by the channel, but okay, big bucks if you insist. But anyway, so nitpicking will tell me that if there is a chink, that has to be the last 4 overs of the Kolkata Knight Riders bowling innings. जनरली क्या करते हैं, शुरू से चोक कर देते हैं, आपको इतना स्टाइफल कर देते हैं कि आपको उतनी विकेट्स नहीं होती टुवर्ड्स द एंड टू एक्चुअली इन्फ्लिक्ट अ लॉट ऑफ डैमेज. बट
if once in a while it doesn't work that way, that happened against Mumbai, where the first 16 overs didn't produce 5 or 6 wickets, then you suddenly found out कि यार नीचे bowler नहीं है, क्योंकि अब नारायण जो आपके gun death bowler था, उसको आप वहाँ कराते नहीं हैं. शाकिब अल हसन को करवा रहे हैं, but he is not your gun death bowler. वो power play में भी कर रहा है, वो death में भी कर रहा है. Left arm spin इतनी चलती नहीं है death में. Andre Russell leaks a lot of runs. There was one game where he bowled only 1 over and the last over 18, yeah. Exactly, 18 or 20 runs. So that is their problem. Monem Okal just bowls one length all the time, very predictable. So that is a bit of an issue, just a bit of an issue. ये bit of a chink in the armor चल जाएगा आकाश, नहीं तो फिर KKR टैक्स लग जाएगा बिग बैग्स में. But we're looking at of course a fabulous team, लेकिन chink in the armor नहीं, लेकिन phobias तो हैं, डर तो है, zoophobia, which is fear of animals. तो हमने आपके नाइट से पूछा which are the animals they're scared of. Let's find out. मुझे सांप से बहुत डर लगता है. Snake! Oh! Yuck! Oh no, it's snakes. I'm out of here. It's a bandicoot. Run for your life. भाई फोबिया से बचने का एक तरीका हो सकता है कि आप बचपन से ही जानवरों के प्रति प्यार बढ़ाइए. अब इसके लिए सिखाना पड़ता है माँ बाप को ही, और उनमें से एक है यूसुफ पठान, जिन्हें बहुत जल्दी सिखाना पड़ेगा किसी को. C for cat, D for dog, E for elephant. भाई पिता का किरदार भी तो निभाना पड़ेगा. यूसुफ पठान who was blessed with another baby boy on the 18th of April. Here are some of the Knights congratulating their teammate. Well done, Yusuf bhai. Congratulations for your newborn baby. Hope you have a great life ahead with your kids. Kolkata Knight Riders fans, we've got a new addition to the family. Yes, Yusuf's had another son, his second son, so it's going to be sensational to see another addition to Indian cricket. And if he's half as good as his father, we're going to see another great Indian cricketer. Yusuf, congratulations, mate, to yourself and your wife and your other son. Congrats, Yusuf, on the birth of your second son. Hi, Yusuf. Congratulations to you and Afreen on the second newborn. Congratulations, Yusuf. So you've got one more cricketer in your family. Yusuf bhai, congratulations on number 2, mate. Another son. Brilliant work, brilliant news. Congratulations, and hope your wife and family are both well. Yusuf bhai, congratulations on the birth of your baby boy. Hi Yusuf bhai, congratulations on your second son. Hello Yusuf Borgi bhai. Just want to congratulate you on the birth of your son. I hope he becomes a fine father like you one day, and that he and my boy can play or have many battles in the future. भाई हम सब की तरफ से भी the entire team of Night Club, the entire team of Star Sports, Yusuf Pathan and his family here is wishing you the very best for this new journey that you will embark upon as a father. क्या पता भैया, 2 भाई हो गए, कल को फिर से पठान ब्रदर्स किसी टीम में आए और जाके शायद अपने अब्बू से पूछें थोड़ी हमें आतिशी बैटिंग, थोड़ी करिश्माई ऑफ स्पिन सिखा दीजिए. लेकिन संजना है ना हमारी, उसे भी बड़ी जल्दी है लेग स्पिन सीखने की. और जब कोलकाता नाइट राइडर्स कैंप के साथ ही है, तो she asked Piyush Chawla to teach her the art of leg spin. This should be interesting. I've been wanting to learn leg spin for a really long time, and now that I have you and we're talking and we're kind of friends, let's do this. Can you teach me how to bowl leg spin? See, leg spin basically known as leg break. So you basically want to break the leg. Yes. So that you can break do with someone's leg. Yeah, that you can do with the bat as well. Why do you need to learn the leg spin? Okay, when you talk about leg spin bowling, you notice that there are the hand movements थोड़े से like dance type होते हैं ना, तो is it derived from some dance form or? Well, it totally depends from bowler to bowler. Sometimes that's how the action works. My action is pretty simple. It's not dance or something. But if you want, I can try something different in the game for you. Not now. Not in the cam. Yeah. You can give us like a little. Thank you. Leg spinners, bhai, from breaking a leg to shaking a leg. Well done, Piyush Chawla. Well done, Sanjana. Well, hopefully हमारी टीम में अब आपकी जगह बन सकती है. लेकिन हमें पता है कि डांस फ्लोर पे पीयूष चावला बॉस रहते हैं. कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉस है भाई डांस फ्लोर पे. लेकिन what about who's the boss? KKR का बॉस कौन? On Night Club today, we've got Surya Kumar Yadav versus Manish Pandey in a game called Handle with Care. केकेआर का बॉस कौन पे आपका स्वागत है. हम फिर से लाए हैं एक चैलेंज हमारे नाइट्स के लिए. कंटेंडर्स आज के लिए हैं सूर्य कुमार यादव
और मनीष पांडे। और चैलेंज का नाम है हैंडल विद केयर। इस चैलेंज में आपको करना क्या है कि आपको आपके बैट के हैंडल पे क्रिकेट बॉल को बाउंस करना है। Whoever's ball drops first loses that round. We're going to do a best of 3. Let's go. 1, 2, 3. तू कर दे भाई पहले स्टार्ट। नहीं, दोनों साथ में करेंगे ना। स्टार्ट में कर। हाँ, साथ में करना है। जिसका भी गिर गया पहले वो लूज़। तेरा गिरेगा पहले। Surya, you have any message for Manish before we start? Beware. मैं आ रहा हूँ टाइप्स। नो यार, ऐसा कुछ मैसेज नहीं है मेरा उसके लिए। Manish, such gentleman. Let's start. In 3, 2, 1. Okay, we have a winner. Round 1, Surya Kumar Yadav. Round 2. Okay, now it's a 1-all score. 1-all. And now round 3, the decider. The lion in Surya is already growling periodically. Let's go. पांडे पांडे Manish Pandey! And you win. How do you feel, Manish? Obviously, it was great. I think it was a very tight call. Very good. I think Surya did really well, and thank you. Thank you for this honor. You want to do a victory dance? No, I think I'm good. कमाल करते हैं पांडे जी। वेल डन मनीष पांडे, केकेआर का बॉस ऑन टुडेज एपिसोड ऑफ नाइट क्लब। हमारे यहाँ तो बॉस एक ही रहते हैं, आकाश चोपड़ा जी। आकाश, बिग थैंक यू। अरे शुक्रिया सर, शुक्रिया। मजा आया आपको? बहुत मजा आया। दिस इज द ओनली नाइट क्लब यू एंटर एंड यू एंजॉय। आई एम सो हैप्पी। That is you. That's the thing. Actually, I've never been to any other night club. Maybe just one night club earlier when I was playing for the Kolkata Knight Riders. वहाँ पे एक ट्रेडिशन था, वैसे मैच के बाद you had to go to the night club. यहाँ पे ट्रेडिशन थोड़ा बदल गया। मैच के पहले you have to come to the night club, just like all of you. Remember to always comment on this video, retweet the video with #AmiKKR, and soon you could be joining us here on Night Club. आज के लिए सिर्फ इतना ही. Here's wishing all the very best to the Knights for tonight. We are here behind the scenes at a shoot to find out what the cricketers are doing and how they're relaxing. What's up, buddy? Very good. Wow. Oh yeah. Yeah. Don't stop. Champion. Everybody know that Chris is a champion. Champion. That's it. जल्दी जल्दी कर बाबा। एक्शन में थोड़ा हंस के, थोड़ा गा के। I mean, kick it.